Hello students. Now in today's video we'll learn the pictorial representation of statistical data. Now in previous standard in 8th, 9th we have studied the bar diagram or bar graph, subdivided bar graph, joint bar graph, percentage bar graph, है ना? All these graphs are used to represent the statistical data. Now in this standard, in 10th standard, we will study the histogram. Histogram is also, it is the pictorial representation of statistical data. Okay, we can represent the statistical data by histogram also. Now the how to draw the histogram. So this is the method. 4 points are given here. First point is, if the given classes are not continuous, then make them continuous. This is the first point. अगर classes अगर continuous नहीं है तो हमें उसको क्या करना है, पहले continuous करना है. Now number 2, show the classes on x axis and frequencies and y axis with proper scale. ठीक है, प्रॉपर स्केल लेके क्या करना है हमको, एक्स एक्सिस के ऊपर क्लासेस लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, फ्रीक्वेंसीज लेना है. टेकिंग ईच क्लास एज द बेस, ड्रॉ रेक्टेंगल विथ हाइट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, जो भी क्लास रहेगी तुम्हारे, वो हर एक क्लास के ऊपर क्या करना है, हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी हाइट जो रहेगी वो क्या रहेगी, उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में रहेगी. ऑन द एक्स एक्सिस ए मार्क, दिस मार्क इज कॉल्ड क्रिंक मार्क. ऐसा मार्क ड्रॉ करना है तुमको. देखो, दिस इज द मार्क, दिस इज कॉल्ड क्रिंक मार्क एंड इट इज शोन बिटवीन द ओरिजिन एंड द फर्स्ट क्लास. ओरिजिन और फर्स्ट क्लास के बीच में जो ये क्रिंक मार्क लगाना है. वाई? बिकॉज इट मीन्स देर आर नो ऑब्जर्वेशन अप टू द फर्स्ट क्लास. यानी फर्स्ट क्लास जहाँ से हम लोग लेने वाले हैं, है ना, जहाँ से अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, वहाँ और ओरिजिन, ये दोनों के बीच में कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है. ये क्या करता है, ये शो करता है. ठीक है. नाउ हियर फ्रॉम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.4 विल टेक वन एग्जाम्पल. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा. So the first example from practice set 6.4 is, draw a histogram of the following data. Height of student is given in centimeter, 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155. If you observe these classes, then these classes are already continuous. No need to make them continuous. Okay. And number of student, that is the frequency is given 4, 12, 16 and 8. And we have to draw this data by histogram. Okay. For that we need one graph paper. So this is the graph paper I took here. Okay, this is our x-axis. We draw this horizontal line and this is the vertical line. So this horizontal line is called the x-axis. So this is our x-axis, this is our origin O. Okay, and this vertical line is our y-axis. Okay, now from the origin, after 1 centimeter we have to take this classes on x-axis with proper scale. So here we start from here. This is 135. Okay, 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, up to this only. And we took one more number, that is 160. So these are the classes on x-axis. x-axis पे हमने classes लिए 135 to 140, then 140 to 145, 145 to 150, continuous type. Okay, now after that, number of student we have to take on y-axis with proper scale. If you observe these numbers 4, 12, 16, 8, these numbers are even number and all these numbers are multiple of 2, है ना. So we took 1 centimeter is equal to 2 here on y-axis. So you will get here 2, 4, 6, 8, 10. Okay, then 12, 14, 16. We take one more number as 18. Up to 18 we took. Okay, now for first class 135 to 140, the frequency is 4. फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 4. तो 135 to 140, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 4 हाइट का क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. ओके, सो वी ड्रॉ लाइक दिस. जिसका हाइट 4 रहेगा उसका क्या करेंगे, वो ऐसा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. सो वी ड्रॉ दिस रेक्टेंगल up to height 4. Then for second class 140 to 145, the height is 12. Height is 12. So 12 comes there. Join ही आएगा ये.
ठीक है, बिकॉज द क्लासेज आर कंटिन्यूस। क्लासेस कैसे कंटिन्यूस है, उसके अंदर गैप नहीं है अपना, ठीक है ना। तो ये जो बार आएंगे वो कैसे आएंगे, सब कनेक्टेड आएंगे। 145 to 150 इट इज 16, सो अप टू 16। और ये जो ग्राफ है यू हैव टू यूज scale and pencil, not color pens, okay, remember this. So 16, after 16 there is 8, up to 8 means this last class 150 to 155, okay. So this is over. We draw rectangle on each class with height proportion to their frequencies. So here on x-axis we took height of the student, so we write here height of the student in centimeter, height of the student in centimeter cm, okay. And on y-axis number of students, we have to write number of students, we write here number of students, okay. After that we have to write scale here. We have to write scale on x-axis. On x-axis 1 centimeter. 1 centimeter is equal to, what is the class width? 150, 140 minus 135, that is 5. So 1 centimeter is equal to 5 centimeter height, that we write here. And on y-axis 1 centimeter is equal to 2 students. And the last work that we have to finish, we have to put this mark, crink mark, between the origin and the first class. That crink mark we have to put here, ठीक है। तो क्रिंक मार्क ड्रॉ करते टाइम तुमको क्या करना है, वो उसको थोड़ा सा रब करेंगे, पेंसिल रब करेंगे और वहाँ पे ऐसा क्रिंक मार्क पुट करेंगे। दैट क्रिंक मार्क इज लाइक दिस, ऐसा मार्क है वो, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव टू फिनिश, वी हैव टू कंप्लीट दिस हिस्टोग्राम। बोलो क्या डाउट है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करके हम लोग और एक एग्जांपल में बताता हूँ आप लोगों को, सेकंड वन। दैट सेकंड एग्जांपल इज हियर ओनली। The table below shows the yield of jawar per acre. Show the data by histogram. Okay, so yield per acre in quintal is given 2 to 3. After that 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 and 10 to 11. We have to make these classes. If you observe these classes, then these classes are not continuous. So first we have to make them continuous, है ना। And in median and mode we have studied how to make classes continuous type. देखिए ना हमने मीडियन में और मोड में क्लासेस को कैसे कंटिन्यूस करना है, हाउ वी कैन मेक देम कंटिन्यूस। सो फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। सो द डिफरेंस इज 1 ईयर। जस्ट डिवाइड दिस 1 by 2, so you will get 0.5. So from this lower limit of each class just subtract 0.5, okay, and in upper class just add 0.5. Okay, so if you subtract 0.5 from 2, then you will get 1.5. 2, just add 0.5 in 3, so you will get 3.5. This is the first class. Now for second class it is 3.5 to 5.5, here 6.5 to 7.5, here 7.5 to 9.5 and 9.5 to 11.5. So in this way we make these classes continuously, ठीक है। ऐसे इसको कंटिन्यूस करेंगे। नाउ आफ्टर दैट वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज द ग्राफ पेपर, ओके। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन is called the x axis and this vertical line, this is our y axis, this is our y axis. Now first class 1.5 to 3.5, so this is the origin. So after origin here we write 1.5, then 3.5, after that 5.5, 7.5, 9.5 and 11.5. Now we'll take these continuous classes on this x-axis as 1.5 to 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 and 11.5. एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये नंबर्स लेंगे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फार्मर्स आर गिवन देयर 30, 50, 55, 40 and 20. All these numbers are multiple of 10. So we take here 1 centimeter is equal to 10, 10, 20, 30, 40, 50 and up to 60,
ठीक है. Now for first class 1.5 to 3.5 we have to draw a rectangle of height 30. That 30 comes here. 30 comes there. So we draw one rectangle here like this. Now for second class the rectangle is of height 50. So we take here 50. Like this. Second 55 is there. So after 50 and 60, 55 in between them, right? After 55th small line we have to consider 1 2 3 4 and 5 like this. 55 60 और 50 के बीच की लाइन रहेगी वो 55 की. आफ्टर दैट 40 कम्स हियर. ये होगा तुम्हारा 40 एंड आफ्टर दैट 20 height 20 like this. So here on x-axis we took yield per acre in quintal and on y-axis we took number of farmers. We write scale as on x-axis 1 centimeter is equal to 2 quintal. You find the class length, class width, then 3.5 minus 1.5, that comes 2. So here we take 1 centimeter is equal to 2 quintal and on y-axis 1 centimeter is equal to 10 farmers we took here. Okay, now we have to put the crink mark between the origin and the first class to show that there is no observation between the origin and the first class. So in this way, this is the second example we draw here. Similarly, last two examples are there in exercise or practice set 6.4. Those two examples you have to solve in your own notebook, and these examples you have to solve in graph book only. Okay, don't draw in simple book. Use graph book here. You can draw two graphs also on one page. You can draw two graphs also. Just make them हाफ पेज करेंगे उसका. आधे हाफ में जो है एक क्वेश्चन नंबर 1, आधे हाफ में क्वेश्चन नंबर 2. इजीली यू कैन सॉल्व. ओके, थैंक यू.